So I was just waiting for a few more people to join. So I think it's fine now and we can start. So today we'll be discussing the thing we have been talking about, energy conservation theorem or energy conservation, law of conservation of energy, you might say it as. And this is the most important topic of this chapter as well as the most important portion of physics. So many things, in fact, everything revolves around this concept and this law. So what we'll be studying firstly, we'll be doing some definitions, some general definitions, which I have got from some sites. Let us read this, then we'll go to examples, then to the derivation of that, how we can prove that energy is conserved, and then thereafter a few questions, not many questions, just a 2-3 questions. And I think this is the last topic. After this class, one more class is required, that is of power, and after that we end with classical physics. So let us begin for now. And okay, fine. So law of conservation of energy. So conservation means constant, something which is not changing throughout, something which is same throughout, and it's not deviating from what it is. If it is, say for example, at point A something is in solid shape, at point B also it is in solid shape, and in point C also it is in solid shape. Do not go into the technicality of matter की यहाँ कोई बात नहीं हो रही, just saying कि एक चीज अगर पॉइंट ए पे एक फॉर्म में है, बी पे एक फॉर्म में है, सी पे एक फॉर्म में, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स फॉर्म, दैट मीन्स कि कांस्टेंट. ठीक, जैसे कि कांस्टेंट जो वर्ड ही है, दैट कम्स फ्रॉम योर मैथमेटिक्स, कांस्टेंट, समथिंग व्हिच इज नॉट चेंजिंग. सो इसमें केमिस्ट्री का कोई एस्पेक्ट नहीं है, एंड केमिस्ट्री मुझे आती भी नहीं इतनी कि मतलब इतना एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट टेक्निकलिटी में जाना ही नहीं है. बस एक चीज है कि कांस्टेंट है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसमें, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट जो कि हर जगह मिल जाएगी किसी बुक में, एनसीईआरटी से. एंड अगर किसी को पढ़ना है अच्छे से तो एनसीईआरटी ही रेफर करना, बेस्ट है एनसीईआरटी. And although it may be transformed from one form to another, if you take all forms of energy into account, the total energy of an isolated system remains constant. I'll mark this in bold. So the total energy of the system remains constant. Okay. All the forms of energy follow the law of conservation of energy. In brief, the law of conservation of the energy states that in a closed system, a system that is isolated from its surroundings, the total energy of the system is conserved. एक closed system में, that means कोई external वहाँ पे कोई चीज नहीं है, वो सिस्टम बंद है, closed system जहाँ पे exchange of energy matter नहीं हो सकता है, वहाँ पे conservation of energy जो होगा, energy conserved रहती है. ठीक है. So this is what we have learned by this definition, simple definition, neither be created nor be destroyed. इसमें किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा है, पढ़ते ही आ रहे हैं और ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, बस थोड़ा सा उसको एनालाइज करेंगे कि क्या है. देन आफ्टर दिस कुछ एग्जांपल्स भी हैं. In physics, most of the inventions rely on the fact that energy is conserved when it is transferred from one form to another. A number of electrical and mechanical devices operate solely on the law of conservation of energy. So as I've already informed, कि most of the devices which we are using in our day-to-day life, they operate on the principle of the conservation of energy. That is the main essence behind all these objects, all these gadgets and objects working near us, in our homes also, appliances. So we have some examples here. So here we go. Firstly, simple example. In a torch, the chemical energy of the batteries is converted into electrical energy. Okay. So torch में cells होते हैं, ठीक है. सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, दो नोड्स होते हैं, कैथोड एनोड, प्लस माइनस. जब हम लोग सेल पुट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा अच्छे से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है. तो क्या हो रहा है, सेल की केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है.
एंड वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से उसके जो टॉर्च का जो बल्ब है उसमें लाइट और हीट एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो केमिकल से कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल में, सेल का केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक। वो गए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से गया लाइट एनर्जी में। फिर सेकंड, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, समवन हैज रेज्ड देयर हैंड बाय मिस्टेक और एनी डाउट? ओके, बाय मिस्टेक. So in hydroelectric power plants, water falls on the turbines from a height. This in turn rotates the turbines and generate electricity. Hence, the potential energy of water is converted into kinetic energy of the turbine, which is further converted into electrical energy. So this we are not discussing right now because I have made a specific slide for this topic. How does a dam work? So इसको अभी के लिए we can ignore. Okay. Just a second. What is happening? शायद होस्ट का स्क्रीन कंट्रोल ऑन है. ओके. इन लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. हर चीज के पीछे वही सेम कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब किसी किसी की एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में वी आर कन्वर्टिंग इट. In a generator, mechanical is converted into electrical energy. When fuels are burned, chemical is converted into heat and light energy. तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही कहीं पर भी, ठीक. इट इज जस्ट बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. Chemical energy from food is converted into thermal energy when it is broken down in the body and it is used to keep it warm. तो एक एनर्जी होती है, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द वर्ड राइट नाउ, ठीक है. एवरी फूड हैज दैट एनर्जी ऑफ इट्स विच इट टेक्स फॉर द स्टमक टू डाइजेस्ट दैट. तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज. तो वो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी जो हम लोग फूड खा रहे हैं उससे भी एक एनर्जी जनरेट हो रही है, जिससे हम लोग, जो कि कैलोरीज हम लोग इसको बोलते हैं कि वी हैव गेन्ड कैलोरीज. अगर एक दिन कुछ ज्यादा खा लिया तो वी से कि अरे आज ज्यादा खा लिया, वी हैव गेन्ड सम एक्स्ट्रा कैलोरीज. क्योंकि एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरीज, जूल्स. तो कैलोरीज के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है. सो कुछ कुछ एग्जांपल थे सारे. ये तो अब हो गया पूरा थ्योरेटिकल पार्ट. अब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे इसको डिराइव करना है और ये कहाँ से आया है एक्चुअली. ये प्रूफ कैसे करेंगे हम कि सच में ऐसा हो रहा है, साइंटिफिकली प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में विदाउट प्रूफ्स देयर इज नथिंग. सो यू नीड प्रूफ्स कि हाउ इज दिस हैपनिंग. देन तो या this one image I have inserted. So what is happening? First form of energy, as you can see in this, in his right hand, which is our left hand. First form of energy, second form of energy, two forms of energy. Now he swaps them. Okay. Now when he swaps them, what happens is second form of energy comes here and first form of energy comes here. That means there is a swapping of energy which is taking place. That in the case of torch, what is happening? Chemical energy, electrical energy, and then your light energy. So swapping of energy was taking place, but it is not being destroyed. Energy is still constant. That will be proving in the next few slides. कि energy destroy नहीं हो रही है, बस change हो रही है from one form to another. So this is through this meme which I've tried to explain you all how it is happening, how the swapping of energy is taking place. So I hope that no doubts till now, and then we can go to some analytical part. And this image, this is not an SD image, but still this might be visible clearly, I hope. This is visible to all clearly. Thank you, Pooja. Only one person is there in the class who is going to reply, else. Okay. So सबसे पहला जो question which is, this is how a dam works, and this is the kind of
what we say as working of a dam, an image of working of a dam. So this is a reservoir जहाँ पे dam का water it is kept. Okay. Then there are these sluice gates. When you release these gates, the water flows. Then there is a turbine which rotates, then a generator, and then it directly connects to power lines or powerhouses. Powerhouse transformer होता है basically. Transformer से then it goes to power lines and to our homes. Okay. So dams का topic is very much important, be it in physics or be it in current also. So यहाँ पे ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहला जो question which should be taken up is what is the energy? Let me use my stylus just a second. So yes, here. So in this case, the water I say is kept at a height h from the bottom of this river, or suppose from the base of the land, something. Total height is h. So now tell me what energy is this water possessing at this particular instant at say this height h, and this is your water at this height. What is the energy it is having at this particular instant while we are seeing this image? What is the energy it is having right now? Yes, as always, Shruti has answered mgh. What is that? Potential energy. Why is that? And why is that? Why not kinetic? Because it's not moving. As simple as that. Kinetic नहीं हो सकता है. B is equals to 0. You might say कि अरे there might be some little bit of stream in the water, but we are considering the water to be at rest, complete rest, no motion with respect to the surroundings. Okay. So yes, why is that? Because and why potential? Why not any other form of energy? Because it is at some height with respect to the ground, and we have already read that by virtue of its position, if anything is having energy due to the virtue of its position, by virtue of its position, that is your potential energy, and kinetic is your motion by virtue of motion, by virtue of position. So position is h from this height. Say this is 0 and this is your x-axis, then this is the height. So mgh is the energy we are having right now here. Okay. So this much is clear. Yes, yes. Okay, clear. इसको कर देते हैं. Now mgh at this height. Now we open these sluice gates. Opened. What will happen? Potential energy है उसके पास. It will start moving. Now as soon as this start moving, B is equals to say x meter per second. What will it have right now? For the time it is moving through this pipe or this canal, you can say. It will have some velocity. That means now it is going to have kinetic energy. And one more question I'll be asking after this. Let me see the chat first. Kinetic, yes, exactly, fine. Kinetic energy. And one more question in between. So we are saying that at this point it is going to have some kinetic energy. Okay. So इस पे question बन सकता है. Like I'll not make it right now, but I'll give you the question and options अभी दे देता हूँ तुरंत ही. So पहला option, the question is कि what would be the state of potential energy at this point? So say if we are talking of this canal or this tube which is transferring the water from the sluice gates to the river or to the turbine. So at this point, I'm asking for this particular point when the water is here at
time t is equals to say 4 seconds. The water is here. So what would be the state of potential energy? Okay. Or to make it more tough, we can ask a question: what would be the state of mechanical energy in this case? So option A, पोटेंशियल लेते हैं, मैकेनिकल हटा देते हैं, पोटेंशियल का क्वेश्चन जा रहा है, मैकेनिकल तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे काइनेटिक है तो सम से थोड़ा निकल जाएगा. पोटेंशियल लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी greater than kinetic at this point, potential energy less than kinetic. Option A, B, C, and option D, as always, is going to be none of the above. And there is no calculation in this question right now because I haven't given you the mass of the water which is flowing at that particular instant, the speed I haven't given. It's just the time which has been given. So just don't go for the answer, the solutions. Just think of it practically. Or let us say C, potential energy less than kinetic. अच्छा, एक और ऑप्शन, इसको लेट अस जस्ट रिमूव दिस ऑप्शन, नन ऑफ द अबव को हटाते हैं. पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल्स टू 0. I hope the options are visible, right? The first option here, it is A option, potential energy is equals to 0. B is potential energy greater than kinetic energy. C is potential less than kinetic, and D is potential energy not equals to 0. C and D. Shruti has said C and D. Okay. Any other options, answers, if anyone is having? C and D. So majority of you are saying C and D. I think that is the right answer then. First answer, that is, but the thing is ki I haven't given you any data. Mass is going to be constant, definitely. Now, for example, if we take this height to be of, you say, okay, then we'll have to give the data to this question. So for now, C and D are the correct option. Potential energy great, क्योंकि वो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि कन्वर्ट हो रही है, तो डेफिनेटली कन्वर्ट हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि काइनेटिक बढ़ेगी एंड पोटेंशियल घटेगी. बट अगर डेटा से जाएंगे तो भी सेम ही आएगा. बट आई हैवंट गिवन एनी डेटा, सो यस, फॉर दिस ऑप्शन डेफिनेटली सी एंड डी आर गोइंग टू बी द, फॉर दिस क्वेश्चन सी एंड डी आर गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शंस. एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है रिगार्डिंग द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का क्या स्टेट होगा, बस ऑप्शंस को रिवर्स कर देंगे, सो दैट वुड बी द सेम. ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया. इसके दो ऑप्शंस हैं, सी एंड डी. ऐसे ही क्वेश्चंस, मतलब अब तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कहीं पर भी कि एम मास दिया है और स्पीड दी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. अब तो ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे नहीं कहीं पर भी. सो क्वेश्चंस ऐसे ही आ सकते हैं कि काइनेटिक को दे दिया, कभी पोटेंशियल को दे दिया एंड पूछ लिया कि इस जगह पे क्या है, एनर्जी नॉन जीरो है, जीरो है, क्या है, जो भी है. ठीक, सो ओके, फाइन. C and D, everyone agrees to C and D, right? Is there anyone who has a new answer for this question? Clear all the drawings. So where were we? Kinetic से sorry, potential से हम लोग आ गए kinetic पे. Potential यहाँ पे mgh थी, यहाँ पे हमारा kinetic बढ़ी. अब यहाँ पे आ गए टर्बाइन पे आ गए, टर्बाइन घूम रही है. तो अब क्या होगा, पोटेंशियल से हमारे काइनेटिक पे, काइनेटिक से अब टर्बाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ट्रांसफॉर्मर्स में जाएगी, फिर वहां से पावर लाइंस के थ्रू घरों में जाएगी. तो सी, ट्रांजिशन, जस्ट सी द ट्रांजिशन, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल. ठीक है, तीन तरीके की एनर्जी, बट कहीं पर भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई. सी, एनर्जी लॉस हो सकती है एक सिस्टम की, ठीक, मतलब क्या कहते हैं, एरर्स हो सकते हैं, ठीक,
कि जितनी बन रही हो एफिशिएंसी की चक्कर हो सकता है, बट टोटल कंजर्वेशन अगर आइडियल कंडीशंस में ले जाए तो कंजर्व्ड ही रहेगी, कभी फुल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यहाँ से पोटेंशियल से काइनेटिक आते 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 यहाँ से इलेक्ट्रिकल ना बने। अगर टरबाइन नहीं घूम रहा है तो बात अलग है, बट टरबाइन घूम रहा है तो जरूर है कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी वो एनर्जी, क्योंकि जनरेटर लगा है यहाँ पे, देयर इज अ जनरेटर हियर, जनरेटर से फिट मतलब जो ट्रांसफार्मर से पावर लाइन सब जो है कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड सो दैट रीचेस आर होम, एंड देन व्हेन इट रीचेस आर होम, then also then what happens? Now see the case when it reaches our home, say this is our homes, now electrical, it has reached our homes, the electricity due to the potential difference. Potential difference is a different concept, don't get confused between potential difference and potential energy. Potential difference is a different concept. पोटेंशियल जहां पर डिफरेंस तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, हमारे घरों में आ गई, अब क्या होगा? अब बल्ब लगे होते हैं घर में, ठीक, इसमें ये फिलामेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं, हर एक केमिकल मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक। अब ये इसमें आएगी इलेक्ट्रिकल से, अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगी लाइट एनर्जी में, और किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हीट डिसिपेट होनी है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, द इनर कंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया कंजर्वेशन। So see where we started off. We started from potential, we went for kinetic, then to electrical, and then finally to heat energy and light energy. So you see, it's not getting destroyed. Okay. केवल heat loss हो सकता है, but energy loss नहीं हो रहा है, ठीक है? So this is clear, I hope. And then to the next concept, which ये तो समझा ही दिया है, and यहाँ पे कुछ theory है which you can read also, but I don't think it's required, but still we'll give it a read. Hydropower plant. In hydroelectric power plants, gravitational potential energy is converted into electrical energy. Electricity produced from the potential energy of water, which is further converted into kinetic energy, is known as hydroelectricity, and a plant that generates electricity on a large scale from flowing water is called hydroelectric power plants. The requirement for a hydroelectric power plant are a strong, fast flow of water and a significant drop down in the water can fall. In hydroelectric power plant, the more electrical power can be generated if water falls from a greater height, because the rise in the water level causes the increase in potential energy of water. Thus, when it flows from higher position, more amount of kinetic energy is formed by the conversion of higher potential energy, and this kinetic energy in the form of moving water can produce more electrical power. So the concept here is, we have discussed, but what this para is saying, see the fourth point. In hydroelectric power plant, more electrical power can be generated if the water falls from a greater height. So in this case, if the height been, say, just a second. Had the height been here, now this height was h, this height is x, and we can clearly see that x is much smaller than h. ओके, ये h यहां तक था, x यहां तक है, सो पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा, एग्जैक्टली आना ही डिफरेंस, क्योंकि हाइट कम हो गई। एंड वी हैव रेड दैट कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है उसके पोजीशन से, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन से। सो अब अगर यहां से होगा तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, पानी तो फिर भी जाएगा, बट द थिंग इज जब पानी जाएगा दैट वोंट बी इनफ टू रोटेट द टर्बाइन, ठीक, क्योंकि बहुत इमेंस एनर्जी चाहिए होती है कि टर्बाइन घूमेगा, उधर से जनरेटर से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो इतनी नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी, अगर हो भी पाएगी तो बहुत मिनिमल अमाउंट हो पाएगा, एंड दैट वुडंट बी इनफ। सो इसीलिए पोटेंशियल का काम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी बड़ी काइनेटिक में बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी में। बस वही फोर्थ पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था उस पैराग्राफ का। सो यही कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी तक किसी को कोई डाउट, कुछ नया है तो प्लीज बता दें, क्या पता मुझे भी कुछ चीजें ना पता हो इस
principle के बारे में, and I'm eager to learn from anyone who is willing to speak or to write in the chat box that you have missed out on this topic, or else we can move forward. Anyone has something to add, or we are fine with this? Because after this class, classical physics is over, and I suppose even modern physics, which are in staging, that is also going to end very soon. So then we'll have questions, many questions, and many more concepts through questions. So उस समय तो add on हो गई, but अभी भी किसी को add on, then you can add, or else we can go ahead with our next topic, which is the same topic but a new aspect and a proof for this law of conservation of energy and how it came into existence. I guess no one has to add anything. We can then start off with this slide. Now we know that energy is neither created and nor destroyed, and it's just transferred from one form to another. But how do we prove it? Or abhi tak I have explained that dam, the working of dam, that energy is potential energy is converted into your kinetic, then kinetic to electrical. But how do we prove it? Because in physics nothing works without proofs. We need a proof for this thing, that yes, this is happening. Even mathematically this is possible. So because if in physics you prove something by mathematics, using mathematics, then definitely that is law, that is the theorem, which is very much true. No one can deny the fact, no one can defy that ever. So we'll be proving this using some using an example with some mathematical calculations, very simple calculations, and then we'll be seeing that yes, energy throughout is conserved. It is not, changing. So, and this is the last derivation for classical physics up till now. Just a second. Now, suppose getting back to those examples of balls, कि कैसे हम लोग वो ग्रेविटी, फ्री फॉल एंड ऑल दिस करते हैं, वैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि पहले यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, वाई एक्सेस, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, 3 पॉइंट्स हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सेस पे. इन 3 पॉइंट्स की स्टडी करेंगे, इन 3 पॉइंट्स में हो क्या रहा है बेसिकली, एंड हाउ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल एंड हाउ इट इज बीइंग डिराइव्ड, ये हमको यहाँ पे दिखेगा. ठीक. सो सपोज यू हैव एन ऑब्जेक्ट O. You're having this object O. Now what you do is you are standing on the top of a tower which has 3 floors, second floor, first floor and ground floor, which is C. Now you drop this, it falls down, comes down to the bottom. So now we'll be studying this. At each point A, B and C will be studying कि क्या हो रहा है, and this height
of this brick or a block, this is H from the ground level. Remember, always take it from the ground level. When you are calculating potential energy, always refer to the ground level, okay, or to the reference point जहां से originate हो रहा है, ठीक. So H height. So for case number A, if we have to write the equations for kinetic energy, what would be that? And if we have to write the equation for potential energy, what would be that? Considering acceleration due to gravity is g and mass of the block is m, what would be for point A? Does anyone wants to answer, or am I the only person who's going to write it once again? mgh plus 0, exactly correct. As always, Shruti has once again answered this question. mgh plus 0 क्यों? What did I refer? कि we are dropping this block. That means u has to be 0. U is going to be 0, right? U goes as 0. And this is at a height of h. Now when this is at a height of h, it has to have some potential, which is mgh. Block is being dropped. Ideal conditions, we take it as 0. That is it. mgh comes out to be the mechanical energy. Mechanical energy is the sum total of potential plus kinetic energy. mgh comes out to be the mechanical energy at point A. That means energy at point A, total energy at point A is mgh. Now let us say कि अब the block, it has traveled some distance x and it has reached to point B. Travel some distance x and reach to point B. Okay. So at point B, what would be the mechanical energy equations? Anyone wants to answer, or all right? Yes, yes, Shruti. mgh minus x. Now see, that's why I told you refer to the ground. So she has answered it correctly. Why are we taking not this? We will not be taking this distance. Okay, we are considering the potential. So we always take it from the ground level. So this height is h. This is x. So this height from ground, this is h minus of x. So mgh minus x. ठीक, ग्राउंड से लेते हैं हमेशा. Then half mv square. We have written half mv square. That is fine, and I know that you even know that how to calculate v, but I want others to answer that how do we get v from this equation. Can anyone tell how do we get v from this equation? If it is difficult to type in the chat box, you can just refer to the concept only, and rest I'll derive. Just tell me the concept. How do we get v from here?
Anyone except Shruti? Just tell me the name of the concept. I'm waiting for that only. Which concept which we have studied is going to be applied here? No one knows the answer. Any guesses? Smita has written a kinetic energy applied. Uh, Smita, please, could you please elaborate this term, kinetic energy applied to everyone, not only to me? While the time she's typing, I just want to know. I'm not asking the complete kinetic energy. क्या होगा? I'm not asking. Just forget that this is kinetic energy. I'm just asking what. How would we get V from this equation? V, only V I am talking about. I want V. Okay, just forget half and m. Just tell me how we will be getting V. Half and m तो वैसे भी constants हैं. V is the variable in the question, right? So how will be getting V through this scenario, through this case? Just take guesses. No one is judging. Okay, Shruti, if you're listening, then please write in the chat because uh, I'm taking a guess that you know this. That how will you just write the concept? I want you to write the concept. If you know, then if you know it's fine, or else I'll write. No one remembers the concept. Just think. Just think. G is constant. Just look here. You'll get it. G is constant. What is G? Acceleration due to gravity. What is U? Initial velocity. What is V? Final velocity. Now we have acceleration, we have initial velocity, we have final velocity. What else do we need? Simple equation यार. चलो अब I'll write. 10 minutes आ चुके हैं इसमें already. Equations of motion. V square is U square. V square is equals to U square plus 2 GH. ठीक है. यहाँ पे U 0 है. G पता है. H क्या है? H माइनस एक्स है. तो V स्क्वायर क्या मिला हमको? हाँ सॉरी, हाँ V स्क्वायर क्या मिला? यार ये बहुत जम्बल्ड अप हो गया, बट आई विल ट्राई टू राइट समवेयर हेयर क्योंकि पहली क्वेश्चन वहां लिख दिया. V स्क्वायर वी गेटिंग इट एज U स्क्वायर माइनस 2 होगा, सॉरी. सो वी आर गेटिंग इट एज, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट उस पे. पूरा खराब सा हो गया इधर. क्लियर, आई एम क्लियरिंग दिस पॉइंट. तो पहले केस में हमको एम जी एच मिली थी एनर्जी. दूसरे केस में हम लोगों ने देखा कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स. इसको ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट इनटू एच माइनस एक्स. तो वी स्क्वायर क्या होगा? यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2gh. u 0 है तो v स्क्वायर क्या होगा? 2gh होगा. हाफ m इंटू 2gh. 2 कैंसिल mgh. सॉरी x, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे h माइनस एक्स होगा. सॉरी, नहीं नहीं यार, क्या हाइट थी उसमें? फिर से बनाना पड़ेगा. जस्ट अ सेकेंड ना. ए बी सी, ये हाइट क्या थी? समवन इज रिटनिंग समथिंग इन द चैट. h माइनस एक्स, राइट. तो यहाँ पे आई जस्ट ड्रॉ वंस अगेन. एक पेज में हो नहीं पाता है, दैट इज द थिंग. ये कहाँ गया? x यहाँ से ली थी ना हम लोगों ने, तो h माइनस एक्स.
तो एम जी एच माइनस एक्स, टू टू कैंसिल हो गया, माइनस एम, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, एम जी एक्स, ये माइनस एम जी एक्स था, ये और ये कैंसिल, बचा क्या, एम जी एच, सिंपल, एम जी एच बचा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, पहले केस में एम जी एच, दूसरे केस में भी एम जी एच। अभी तक तो दिख रहा है कि हाँ कैन ये जो हमारा अभी तक एनर्जी है कंजर्व्ड ही है। पॉइंट ए पे एमजीएस थी, पॉइंट बी पे एमजीएस थी, पॉइंट सी पे देखना है बस हमको। अब अगर हम पॉइंट सी प्रूव कर दें, ठीक, पूरा ओके ओके, इसमें था आस्क मी डाउट, ओके फाइन, बट ओके आई एम नॉट गेटिंग योर डाउट स्मिता, समझ में नहीं आ रहा है व्हाट आर यू आस्किंग। लाइक अच्छा, everyone is having doubts, if anyone is having doubt then please write in the chat box. कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि डेरिवेशन समझने में, आई विल एक्सप्लेन इट फिर से एक बार, नो इश्यूज, वी स्टिल हैव टाइम। डू यू वांट मी टू रिपीट इट? Okay, fine, fine. Actually, the thing is कि the screen is limited and I am using a stylus. My laptop screen is tilted at an angle, so it's difficult for me to draw each and every time. But what I can do is अभी के लिए तो we have to adjust with this only. But I'll explain you the concept once again. ठीक है? I'll explain the concept and narrate it once again, and I'll give you a written proof of this whole thing. Written, I'll give you in a form of document. From there, you can easily understand that what I am trying to say. अभी के लिए I'll just try to explain once again. ठीक है, क्या हो क्या रहा है एक्चुअली में, क्योंकि स्क्रीन का थोड़ा सा इशू है, सो जस्ट बेयर विद दैट, स्क्रीन का इशू है, आई डोंट हैव अ board to write upon, I'm writing on my screen, so that is the issue, I have to clear it every time I write something new. Just once again, okay, once again, I'll go slow this time. A, B, and C. This is height H. Okay. You drop a brick. एक पत्थर यहां से गिराया. Firstly, हम लोग इस पोजीशन पे, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इस पोजीशन की बात हो रही, केवल ए पोजीशन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं अभी. ए पोजीशन के लिए आई विल राइट छोटा छोटा, ताकि you all are able to see and everything is fitted into one screen. I don't have to use another slide for this. So M G H plus kinetic is going to be 0 at this point because we are dropping this block. So M G H plus 0 as Shruti mentioned. So M G H. Is this fine? इसमें कोई doubt? I'll wait for 2 minutes. सब लोग देख लो एक बार कुछ इसमें डाउट है, and then we'll proceed. ठीक है, चलो MGH. ठीक है, अभी अब क्या हो रहा है, ये ब्लॉक है, नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कवर सम डिस्टेंस विच इज गोइंग टू बी x. ये डिस्टेंस x होगा, ठीक, बट एट दिस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी टोटल होती है. ठीक है, सो अभी उसमें क्या होता है, आफ्टर सॉल्विंग, आई एम नॉट राइटिंग द इक्वेशंस राइट नाउ, ठीक है, आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे फिर से जम्बल्ड अप हो जाएगा. बट आफ्टर सॉल्विंग वी गेट कि इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे, ठीक, इस पॉइंट पे भी एम जी एच ही आती है एनर्जी. ठीक, यहाँ पे सम यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इस पॉइंट पे भी एम जी एच आता है. एंड उसका आई विल गिव यू द डॉक्यूमेंट. यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ हो क्या रहा है. इस पॉइंट पे हम लोग जब निकालेंगे पोटेंशियल, तो ग्राउंड से मेजर करेंगे,
नाउ फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्टेंस इतना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस h है, एंड यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है, तो ये और ये कितना होगा, h माइनस एक्स होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैथमेटिकली देखें तो h माइनस एक्स होगा ये ग्राउंड से। सो व्हाट वी डू इज mg, जस्ट bear with my writing क्योंकि स्क्रीन tilted है and I have to write this in this way only. So mg, I'm trying to write still, h minus of x. Okay, mg h minus of x, ये पूरा इसमें जाएगा, तो यहाँ पे mg h आता है और माइनस ऑफ mg x आएगा, mg h एंड माइनस ऑफ mg x। ठीक, अब मैंने उस समय ये बोला था कि हो क्या रहा है एक्चुअली, कि अब ये ब्लॉक जो है इट इज फॉलिंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन विच इज g। सो समझ में मेरा वहां पे यही क्वेश्चन था कि विच इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 1D मोशन है, तो हमारे पास कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। 1D मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब कि हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन, वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वही चीज आई वाज आस्किंग एट दैट टाइम कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है ऐसा जो वी कैन यूज हियर टू फाइंड v स्क्वायर, क्योंकि हमें हाफ mv स्क्वायर में हमें v स्क्वायर चाहिए था। ओके, हमें v स्क्वायर चाहिए था, तो v स्क्वायर कैसे मिलेगा हमको, v स्क्वायर हम लोग यहां से निकालेंगे, राइट। और v स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है, अगर हमें पता है किसी ऑब्जेक्ट ने क्या डिस्टेंस कवर किया है और उसकी इनिशियल क्या थी, g पता है, h पता है, दैट इज इट, हो गया। तो अब हमको यहां से क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। u स्क्वायर 0 था, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस x कवर किया है, ठीक। तो u स्क्वायर की जगह 0, 2g, g की जगह g रहेगा, h की जगह क्या आएगा, x आएगा, h की जगह x आएगा। अब इसको यहां पे रखेंगे, हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू आई थी, रिमेंबर v स्क्वायर की ये वैल्यू आई है, v की वैल्यू नहीं आई है, v स्क्वायर की आई, तो एज इट इज यहां पे जाएगी 2gx, 2 और 2 कैंसिल, दैट इज mgx। नाउ अब हम लोग ऐड भी तो करेंगे ना, मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट मींस काइनेटिक हमने यहाँ पे निकाली mgx, पोटेंशियल हमने यहाँ पे निकाली थी mgh माइनस mgx। तो क्या mgx और प्लस mgx और माइनस mgx क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको mgh मिली, मतलब A पॉइंट पे mgh, B पॉइंट पे mgh। अभी तक एनर्जी कंजर्व्ड है। आई होप आई एम क्लियर नाउ। ओके ओके, थैंक यू पूजा, थैंक यू स्मिता। ठीक है, चलो ठीक, तो mgh एट दिस पॉइंट, mgh एट दिस पॉइंट, so the case now is only dependent on this c point. I'm clearing this whole, shall I clear, if, because screen there is not much space left, so can I clear this? Anyone wants to copy or screenshot or anything, then please tell, I'll wait for a couple of minutes and then I'll clear and move with the c portion, that is the ground floor. I'll clear this, okay, then if you don't have to copy this or you have already done. Noted. Okay, thank you. So clear. Now A, B and C. Now let us see, A के लिए mgh थी, B के लिए भी mgh थी energy. Now we have to study for the case of C. Let us see what is happening at C, point C. Okay. So सबसे पहली बात, height h. Okay, fine. अब यहां से, ठीक, क्या हो रहा है, सबसे पहले सी, यहां पे क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगी,
You will be solving this C case. I have already told solved two. So अभी C पे potential क्या होगी? जीरो. C पे potential जीरो. Kinetic क्या होगी? Kinetic, can anyone solve? Tell. हाफ mv स्क्वायर होता है. Kinetic क्या होगी यहाँ पे? Just go back to the same concept once again. V स्क्वायर निकालना है. G कांस्टेंट है. मास पता है. बस इक्वेशंस ऑफ मोशन में पुट करो एंड फाइंड आउट V स्क्वायर. ओके, आई राइट. नो इश्यूज. हाफ mv स्क्वायर. U जीरो ही था, लेकिन अब ये ब्रिक ने x डिस्टेंस नहीं क्रॉस किया है. अब ये पूरा क्रॉस करके नीचे आ चुका है. इट इज अबाउट टू टच द ग्राउंड. दैट मीन्स h इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू h. तो v स्क्वायर u जीरो था, क्या होगा? v स्क्वायर क्या होगा? 2gh होगा. 2 cancel. mgh. So here we reduce that at point A energy is mgh, point B energy is mgh, and at point C also energy is mgh. That means form of energy is changing. It went from potential to kinetic, and then once again potential became zero, and then kinetic also became zero after the ball stops or the brick stops after rebound or something. So finally हो कह रहा है चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, सॉरी फॉर्म चेंज हो रहा है, बट एनर्जी कांस्टेंट है. द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट. mgh तीनों ही केस में. That clearly implies that energy is neither created nor destroyed. It can just be transferred from one form to another. I hope this is clear now. Yes, Shruti. V square is equal to 2gh, and hereby we have deduced at all the 3 points energy was mgh. No one is ever going to ask this derivation, but just for conceptual clarity it was required, and I just wanted to see that if you remember equations of motion or not. Clear to everyone? Not to everyone, only to those who are listening. Is it clear? Is it fine? Energy only moves because it is conserved. Yes, just a change of word in your sentence. Transferred. Energy only transfers because it is conserved. Hypothetical, vice versa is also true. कि the case is कि अगर जैसे conservation of momentum, if something is gaining something, then if someone is losing something, the other person is gaining that thing. If you remember that example, conservation of momentum से analogy create करना बहुत easy है इस particular concept. I'll show you how. I have that table right now. See, so Pooja wrote कि if energy is being transferred, then it is conserved. So as same as momentum, it goes बिल्कुल ditto momentum वाला case है. ठीक. Person A has 100 rupees, person B has 100 rupees, person A gives 50 rupees, that means minus 50 हुआ उसका, person B receives 50 rupees, उसका 150 हुआ, plus 50 हुआ, लेकिन total amount before जो 200 था वही 200 है. So इसको अगर हम लोग एनर्जी के यहाँ पे अमाउंट की जगह अगर हम यहाँ पे जूल लगा दें, ठीक, तो बस हो गया. 200 जूल पहले थी, 200 जूल बाद में, कंजर्व्ड है. पूरे सिस्टम की एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक. ओके, फाइन. टाइम इज ऑलमोस्ट अप. Just 2 questions and
Law of conservation of energy. A block of mass 20 kg is moving with velocity itna. Maximum amount of heat that can be generated from the block is. So firstly, heat is also a form of energy. Everyone knows that. Heat is also a form of energy. Light energy, heat energy. Everyone knows. तो ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि अरे एनर्जी की बात हो रही, हीट कहाँ से? हीट इज ऑल्सो एनर्जी. इसका आंसर कोई बता सकता है? देख के तो लग रहा है कि हाफ है और 20 है, तो कैंसिल होगा 10. फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लगेगा. ब्लॉक ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी है, तो हाफ है, 20 कैंसिल होगा, 10 बचेगा, 10 इंटू 10. तो आई गेस इसका आंसर शायद 1 के किलो जूल होना चाहिए करीब. के जी मीटर पर सेकेंड. हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर 10 10 इंटू 100. यस, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, 1 किलो जूल. एनी डाउट्स इन दैट? चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं, हीट कैन नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम इट. यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हीट जनरेट होनी ही होनी है. इरेगुलरिटीज जब ब्लॉक होंगी, फ्रिक्शन. ये चलो, ये क्वेश्चन एक अच्छा मिल जाएगा इसका. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ओनली to the 3 people who are attending the class and are present mentally. Okay, so we have one answer. That is option number 3. Any other answers? Pooja, Smita, or the same answer? Same. Okay. So I think third is going to be the correct answer. Okay. So when a bullet is shot upward and then started falling down at some point because of gravitational force. So यहाँ पे some people might not consider the internal process which is going inside a pistol when it is shooting a bullet. So that also has to be considered कि bullet के अंदर जो chemical reaction होगा, that is also generating some energy which is generating the velocity in the bullet. Okay, so chemical potential energy होगी वो. The bullet gains velocity, it is kinetic energy. After gaining velocity, it reaches the maximum height, then starts falling downwards. That is, firstly it reaches the maximum height, that is the gravitational potential energy. Then it starts falling downwards, it is the kinetic energy. So I think option 3 is the correct option. It is going to be chemical potential energy, then kinetic energy, then gravitational energy, and then once again kinetic energy. So this is for today. This is it for today. Rest doubts you can ask in the basic foundation group. Thank you, everyone. Confusion. Okay, just a second. Acha, oh, some confuse one. Yes, exactly. Some might confuse with one, and basically some might confuse with two, because you might not consider the first formula, which is chemical potential energy, and you might go straight away for kinetic energy because the question states bullet is shot upward. So the first thought which might strike to your mind is कि bullet is moving, then it goes to the maximum height, then it falls down. So might confuse with two as well.
Yes. Okay, so can we call it for the day? I think it is done. Any doubts? Then uh, text me or text in the basic foundation course group. Thank you.